Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to tell you about the superior mediastinum. Uh, Previously, I have told you the brief view of mediastinum, that how mediastinum is formed, what is mediastinum, what are the boundaries, what is superior and inferior mediastinum. Today we will go into some deep discussion of superior mediastinum, that what are their contents and what are the description of their contents as well. So I have told you already that this is the diagram that I have chosen from the KLM. Simple diagram. The mediastinum is occupied by the mass of tissue between the two pulmonary cavities. Okay, on the each side, this is a cut section basically, but on each side there is pulmonary cavities, and in the central compartment there is a thoracic cavity. Here you can see ये तो व्यू दिखाया हुआ thoracic cage का. So on each side there is a two pulmonary cavities, and in between them is a central compartment of the thoracic cavity, and it is covered by on each side by the mediastinal pleura. And the mediastinum contains all the thoracic viscera and structure except the lungs. Okay, lungs are not included in the mediastinum. The mediastinum extends from the superior thoracic aperture to the diaphragm inferiorly. This one is the superior thoracic aperture. I have told you about that and its boundaries. And here it is the inferior thoracic aperture. So the mediastinum extends from the superior thoracic aperture up to the diaphragm inferiorly, and from the sternum and costal cartilages anteriorly. Okay, sternum and costal cartilages anteriorly, and posteriorly there are the thoracic vertebrae. Here you can see this is the thoracic vertebrae. So main thing that is about the mediastinum is first of all you should know that it is occupied by the mass of tissue between the two pulmonary cavities, and in the central compartment is the thoracic cavity, and it is covered on each side by the mediastinal pleura and contains all the thoracic viscera and structure except the lungs. Okay, the mediastinum extends from the superior aperture up to the diaphragm. Here is the diaphragm. Okay, and then the inferiorly there is a diaphragm, and on anteriorly there is sternum and the costal cartilages, and posteriorly there is a thoracic vertebrae. Unlike the rigid structure that are observed in a cadaver, okay, but the mediastinum in the living people is highly mobile. Okay, it's a mobile region because it consists of primarily by the air-filled visceral structures that are united by the loose connective tissue, okay, and sometimes by the fat. The major structures that are present in the mediastinum are surrounded by blood vessels, lymphatics, lymph node, nerves and fats. Okay? They are major structures, and along with that there are arterial, venous supply and lymphatics. The elasticity and looseness of the parietal pleura and lungs that are present on each side of mediastinum, they are basically enable it to accommodate movement as well as the volume and pressure changes. You have learned in the respiratory system of physiology as well that how during respiration these type of movements of the diaphragm, thoracic wall, tracheobronchial tree, they all contract by the beating of the heart. So this is very important that the connective tissue becomes more fibrous and rigid with age. Okay, and hence the mediastinal structures become less mobile along with the age. So we divided the hair in this diagram. We divided the mediastinum into superior mediastinum and the inferior mediastinum. Okay, the superior mediastinum extends inferiorly from the superior thoracic aperture to the horizontal plane that includes the sternal angle. Okay, sternal angle, if we passes an imaginary line, I have told you already, from the sternal angle, and then it passes posteriorly up to the junction of T4 and T5 vertebrae. Okay, this is T4 and this is T5. In between them, if we passes an imaginary line, so it is sometimes referred as thoracic transverse thoracic plane. Okay, so the mediastinal content that is present above this line is the superior mediastinum, and below is the inferior mediastinum. Okay, and it is further subdivided. This inferior mediastinum is further subdivided by the pericardium into anterior
middle and posterior parts. ठीक है, there is anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior part. These are the further division of the inferior mediastinum. ठीक है, और इसके inferior mediastinum का जो major part है that is covered by the pericardium and heart, or we can say the pericardium and its contents, and it's constitute the middle mediastinum. Some of the structure just like esophagus, they are passes vertically through the mediastinum, and they are also present in at one time between the टू कंपार्टमेंट्स. ठीक है, वो सुपियर में भी हो सकते हैं, इन्फीरियर में भी होते हैं. जैसे कि एसोफेगस है, ठीक है, वो पास करती है तो वो दोनों मेडिस्टिनम से गुजरती है. सो बी रिमेंबर दिस थिंग कि देयर आर सम स्ट्रक्चर विच पासेस बिटवीन द बोथ ऑफ दीज मेडिस्टिनम. नाउ द सुपियर मेडिस्टिनम की बाउंड्रीज जो हैं वो क्या हैं? यू कैन सी हेयर दैट द सुपियर मेडिस्टिनम इज एंटीरियरली बाउंडेड बाय द मेनिब्रम स्टर्नाई. This is the manubrium sterni, posteriorly by the upper four thoracic vertebrae. Superiorly there is a thoracic aperture. Inferiorly there is a line that is passes through the sternal angle in front and the lower border of the body of fourth and fifth thoracic vertebrae. ठीक है, and on each side there is similarly mediastinal pleura. Okay, these are boundaries of superior mediastinum. Now you should remember about the what are the contents of the mediastinum. Okay, so we have to go towards anterior to posterior. Posteriorly जो हमारे पास contents होते हैं mediastinum के, that are very important. एटलस मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ. This is the diagram of the heart and its surrounding vessels. You can see here that there is not only the heart, but above it there is a lymphoid organ or globular lymphoid organ. This is called as thymus. Okay, so when we discuss the superior mediastinum lies superior to the transverse thoracic plane that is passing through the sternal angle and the junction of T4 and T5 from anterior to posterior. ठीक है, हम जब भी contents बताएंगे superior mediastinum के, we will always write like this, that from anterior to posterior. So anteriorly there is a thymus first of all. Then second one is the great vessels. You can see just behind them there are the great vessels. They include veins and arteries. Firstly the veins and then behind them there are arteries. Okay, then inferior continuation of cervical viscera जो ऊपर से आ रहा होता है viscera, that is called as जो neck में आ रहा होता है, that is cervical viscera. ठीक है, और उसके अंदर trachea anteriorly and esophagus इसके posteriorly होती है. ठीक है, ये be remember this thing कि this is the relation between them. ट्रेकिया एंटीरियरली और फिर इसके पीछे पोस्टीरियरली एसोफेगस है, एंड देयर आर आल्सो रिलेटेड नर्व्स लाइक लेफ्ट ट्रिकंडर लेंजिन नर्व. ठीक है, एंड फिर उसके पीछे थोरेसिक डक्ट एंड लिम्फेटिक ट्रंक्स आ जाते हैं. ठीक है, फॉर द समरी पॉइंट ऑफ व्यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में द ऑर्डर ऑफ द मेजर स्ट्रक्चर्स इन द सुपियर mediastinum फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इज thymus, veins, arteries, then airway, and then the alimentary tract behind that, and then lymphatic trunks. Okay. Now I am going to tell you about firstly about the thymus. Okay, the thymus is a primary lymphoid organ. You should know about its parts, its location, as well as how it is supplied by arterial, venous, and also the lymphatics that are draining these. So the thymus is a primary lymphoid organ and it is located in the inferior part of the root of neck. Okay, inferior part of the neck or in the root of neck and anterior part of the superior mediastinum. It is a flat gland with flask-shaped lobes, okay, that lies posterior to the manubrium sterni. ठीक है, इसके आगे manubrium sterni and it extends into the anterior mediastinum anterior to the fibrous pericardium. ठीक है, थोड़ा सा एरिया इसका anterior to the fibrous pericardium भी होता है. The main and rich arterial supply of thymus is derived from mainly from the anterior intercostal arteries as well as anterior mediastinal branches of internal thoracic arteries. You should remember about its arterial supply. Okay. डेफिनेटली यहाँ पर वो इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं तो दे आर सप्लाइंग देम. सो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज एंड एंटीरियर mediastinal branches of internal thoracic arteries. The veins of the thymus and in the left brachiocephalic vein, internal thoracic vein and inferior thyroidal veins. ठीक है, ये दोनों की दोनों veins आपकी कवर करती हैं इसको,
और यहाँ से जो थायराइड को वेंस जा रही होती हैं, इन्फीरियर थायराइडल वेंस होती हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो ड्रेनिंग दिस thymus gland. And the lymphatic vessels of the thymus, and in the parasternal, brachiocephalic and tracheobronchial lymphatic nodes. So you have to remember not only about its parts, location, and along with that there are age related changes that occur with this thymus gland. It is present at the time of birth and it's continued to grow up till puberty. But after puberty, the thymus undergoes gradual involution and it is largely replaced by the fibrous fatty tissue. Okay, so it tends to regress with time. You should remember this age related changes as well. So thymus is primary lymphoid organ located in the inferior part of neck and anterior part of superior mediastinum. Okay, and at the time of puberty and or after puberty, the thymus undergo gradual involution and it is largely replaced by fatty tissue. Okay, it has rich arterial supply, venous supply, and the lymphatic vessels of the thymus and in the parasternal, brachiocephalic, and the ट्रेक्योब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो इसके साथ कवर करती हैं, वेन्स के साथ लिम्फ नोड्स आती हैं, इन सारों को ये कवर करता है. So after thymus, we can see behind that are the great vessels, जिसमें veins आ जाती हैं सबसे पहले. So the great veins that are present in the superior mediastinum are the right and left brachiocephalic veins. You can see here, this one, ठीक है, ये these are, ये जो दोनों हैं, ठीक है, they are right and left brachiocephalic veins, ठीक है. और ये कैसे बन रही हैं, you have to tell this as well. The right and left brachiocephalic veins are formed posterior to the sternoclavicular joint by the union of internal jugular and subclavian vein, ठीक है. This one is the right brachiocephalic vein and it is formed by the subclavian vein and internal jugular vein. They join together and they will form this right brachiocephalic vein. And on the left side, the left brachiocephalic vein is formed by the left internal jugular and left subclavian veins. And at the level of inferior border of the first right costal cartilage, the brachiocephalic veins unite to form, they are unite to form what is the level? Their level is the inferior border of the first right costal cartilage. This brachiocephalic veins unite to form superior vena cava. Okay, the left brachiocephalic vein is more than twice as long as the right. Why? Because brachiocephalic because it passes from the left to right side. ठीक है, ये ज़्यादा कोर्स करके लेफ्ट टू राइट साइड जाना होता है, तो फिर ये जो है ना वो सुपीरियर वेना कैवा बनाती है. So anterior to the root of three major branches of the arch of aorta. यहाँ पर arch of aorta है, ठीक है. अभी ये मैं अगली डायग्राम में आपको दिखाऊंगी जब थाइमस हटा हुआ होगा, तो यू कैन सी इजीली कि इस आर्च ऑफ एओर्टा के बिल्कुल इंटीरियरली ये सारी वेन्स बन के दोनों मिलके सुपीरियर वेना कैवा बनाती हैं. द ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स शंट ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक, अपर लिम्स एंड up to the right atrium. You have to write down about their formation, at which level they are formed, and also the area they drain. Okay, जितना भी एरिया ये कहाँ से ब्लड लेकर आ रही होती हैं, किस तरह राइट एट्रियम तक पहुँचती हैं, you have to tell that. The brachiocephalic veins shunt blood from the head, neck and upper limbs to the right atrium. ठीक है, तो right atrium में सुपीरियर वेना कैवा ड्रेन हो रहा होता है, तो definitely they turn them into the right way. So it was about the right and left brachiocephalic vein. So after that, that is present in the superior mediastinum is the superior vena cava. Okay, superior vena cava is what is, ये इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है. ये लेफ्ट साइड की दिखाई हुई है, लेफ्ट brachiocephalic vein, ये राइट brachiocephalic vein, they join together and they form the superior vena cava. Okay, सुपीरियर वेना कैवा रिटर्न्स ब्लड, ठीक है. ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से ब्लड लेके जा रहा है, ये कहाँ लेके जाएगा. सुपीरियर वेना कैवा रिटर्न्स ब्लड फ्रॉम ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर सुपीरियर टू द डायफ्राम एक्सेप्ट द लंग्स एंड हार्ट. ओके, all of the structure superior to the diaphragm except the lungs and heart. It passes inferiorly and ends at the level of third costal cartilage where it enters the right atrium of the heart. Okay, यहाँ नीचे heart है, where it enters into the right atrium of the heart. The superior vena cava lies in the right side of the superior mediastinum. ठीक है, superior mediastinum में थोड़ा right side पर होता है, ठीक है. इसका relation आपने लाजमी बताना है that it is anterolateral to trachea,
ये आप देख रहे हैं कि पीछे ट्रेकिया है, ठीक है। इट इज़ एंट्रोलैटरल टू ट्रेकिया एंड पोस्ट्रोलैटरल टू द असेंडिंग एओटा, ये असेंडिंग एओटा जा रही है, ठीक है। पोस्टर है, थोड़ा सा लैटरल है। इट इज़ लाइज लैटरली ओवर द सुपीरियर मेडियास्टिनम, ये थोड़ा सा लैटरली होता है। एंट्रोलैटरल टू ट्रेकिया and posterolateral to ascending aorta. The right phrenic nerves lies between the superior vena cava and the mediastinal pleura, ठीक है। जो राइट फ्रेनिक नर्व है वो ये जा रही है आपकी, ठीक है, ये नीचे से आ रही है, ये पूरी की पूरी ये राइट फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। दिस राइट फ्रेनिक नर्व lies between the superior vena cava and mediastinal pleura. The terminal half of the superior vena cava is in the middle mediastinum, ठीक है। यहाँ से ये एंटर हो जाती है नीचे inferior mediastinum, inferior mediastinum में भी middle mediastinum, क्योंकि पेरिकार्डियम middle mediastinum में आता है, where it lies beside the ascending aorta and forms the posterior boundary of the transverse pericardial sinus, ठीक है। यहाँ पर इसका रिलेशन डिफरेंट हो जाता है इन द लोअर पार्ट, क्योंकि द टर्मिनल हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा इज इन द मिडल मेडियास्टिनम। ओके, दिस वाज अबाउट द सुपीरियर वेना केवा, कहाँ से कैसे बन रही है, कहाँ ड्रेन हो रही है, कहाँ कहाँ से ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टुवर्ड्स द असेंडिंग एओर्टा, ये जो आपकी जा रही है, दिस इज़ असेंडिंग एओर्टा। ओके, तो असेंडिंग एओर्टा के लिए मैं आपको मैंने जैसे लास्ट अपने लेक्चर में भी प्रॉपर आपको एओर्टा का बताया था कि असेंडिंग है, आर्च है और फिर डिसेंडिंग है। तो इसमें असेंडिंग और आर्च ऑफ एओर्टा आ जाते हैं सुपीरियर मेडियास्टिनम में। यहाँ हम देख सकते हैं इन दिस डायग्राम, दिस वन इज़ असेंडिंग, दिस इज़ आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर यहाँ से नीचे डिसेंडिंग एओर्टा आ जाता है, ठीक है। So this is ascending aorta that is approximately 2.5 centimeter in diameter and it begins at the aortic orifice. यहाँ पे aortic orifice होता है, that is started from the aortic orifice, और उसके बाद इसकी तो देयर आर इट्स ओनली ब्रांचेज आर द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, दैट आर राइजिंग फ्रॉम द एओर्टिक साइनसेस, ठीक है। द असेंडिंग एओर्टा इज इंट्रा पेरिकार्डियल, ठीक है। फॉर दिस रीजन एंड बिकॉज इट लाइज inferior to the transverse thoracic plane, it is considered a content of the middle mediastinum mainly, ठीक है। इसलिए इसको जो है ना हम मेनली मिडल मेडियास्टिनम का कंटेंट समझते हैं, क्योंकि ये इन्फीरियरली भी होती है और इट्स मेन पार्ट इज़ द इंट्रा पेरिकार्डियल, ठीक है। तो असेंडिंग एओर्टा में आपने ये छोटी सी चीज़ बतानी है कि क्या है, और इसकी मेन ब्रांचेस आर ओनली ब्रांचेस आर द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। दिस वाज असेंडिंग एओर्टा। नाउ कॉमन टुवर्ड्स द arch of aorta. Okay, arch of aorta is a curved continuation of the ascending aorta. You have told that it begins posterior to the second right sternocostal joint, ठीक है। यहाँ आगे इसके sternocostal joint होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और डायग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एटलस में बनी हुई है। यहाँ पे असेंडिंग तो नहीं दिखाई हुई, लेकिन आर्च ऑफ एओर्टा बड़ी अच्छी दिखाई हुई है, ठीक है। और इसके रिलेशनशिप्स भी आपको दिखाए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा, इसके पीछे ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे एसोफेगस है, ये ऐसे ही रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसीलिए इस आर्च ऑफ एओर्टा से नीचे जो असेंडिंग एओर्टा है दैट इज प्रेजेंट इन द inferior mediastinum, और इट्स कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ inferior mediastinum. So the arch of aorta is a curved continuation of the ascending aorta. It begins posterior to the second right sternocostal joint at the level of sternal angle. Okay, it arches superiorly, posteriorly, and to the left, and then inferiorly. Superiorly, posteriorly, and to the left, and then inferiorly. ठीक है, the arch ascends anterior to the right pulmonary artery and the bifurcation of trachea. बिल्कुल आपको नज़र आ रही है bifurcation of trachea के आगे स्टार्ट होती है, anterior to the right pulmonary artery, ठीक है, and the bifurcation of trachea and reaching its apex at the left side of the trachea and esophagus. Okay, at the left side of trachea and esophagus there is a, ये मैं इसको रिलेशन भी आपको साथ ही दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड इट पासेस ओवर द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग, ठीक है। उसके ऊपर आपको इसका इंप्रेशन भी नज़र आता है लेफ्ट लंग के रूट पर, ये जब लंग पढ़ेंगे आप आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इट पासेस ओवर द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग, द आर्ट डिसेंड posteriorly to the left root of the lung beside and T4 vertebrae, ठीक है। The arch ends by becoming the thoracic or descending thoracic aorta posterior to the second left sternocostal joint. Okay, second left sternocostal joint. Okay, it becomes like this. So this was the arch of aorta. The arch of aorta की branches फिर आपने बतानी है, वो जैसे मैं आपको पहले बताई थी that the arch of aorta की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो राइट और लेफ्ट पर डिफरेंट होती है, ठीक है। On the right side it gives it gives brachiocephalic trunk. This is brachiocephalic trunk. It gives on the right side,
ठीक है, राइट साइड पर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और ऑन द लेफ्ट साइड इट डायरेक्टली गिव लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. Okay, both left common carotid and left subclavian, and on the right side it gives brachiocephalic trunk, and this brachiocephalic trunk is then divided into subclavian artery and the right common carotid artery. So these are the simple branches. आपने नाम लिखने, फिर आपको आगे इसकी अगर आपके पास मिडास्टिनम में एज ए कॉन्टेंट आया ये क्वेश्चन लिखने को, तो फिर आपने मजीद उसकी सबक्लेवियन की ब्रांचेस या और ब्रेकियोसेफेलिक के जो आगे मेन कॉमन कैरोटिड की ब्रांचेस हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यू शुड रिमेंबर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द आर्च ऑफ ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा. ओके, ये कहाँ ये ब्लड को फिर कैसे बॉडी के अंदर ये सारा सर्कुलेट करती हैं. ठीक है, इसके थोड़े से रिलेशंस आपको पता होने चाहिए और हाउ इट इज़ फॉर्म. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल अबाउट दी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. थोड़ा सा अब आपको नेक्स्ट पे आना होगा, तो वो आपने ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक अलहदा से एक्सप्लेन करना है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन, क्योंकि ये दीज आर द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा. ठीक है, तो इन तीनों को आपने अगर आपके पास पूरा आर्च ऑफ एओर्टा आ गया लिखने को, तो आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है. बहुत इनकी डीप डिस्कशन नहीं जाना, इनकी सारी एक एक करके ब्रांचेस नहीं लाने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइड्स पे क्या डिफरेंसेस हैं. So now come on towards the brachiocephalic trunk. The brachiocephalic trunk is the first and the largest branch of the arch of aorta. It arises posterior to the manubrium, where it is anterior to the trachea and posterior to the left brachiocephalic veins. ठीक है, वो तो veins के तो मैंने आपको बताया ही था कि veins पहले आगे होती हैं और फिर ये posterior होती है. ठीक है, the trunk ascends supralaterally to reach the right side of the trachea and right subclavian sternoclavicular joint, where it divides into right common carotid and right subclavian arteries. बस ये आपने बता दिया इतनी सी बात. That will more than enough. On the left side, there is a left common carotid artery. It is the second branch of arch of aorta. It rises posterior to the manubrium sterni. Relation आपने ज़रूर बताना है साथ साथ that where it arises. ठीक है, ये landmark ज़रूर पता होना चाहिए. It arises posterior to the manubrium, slightly posterior and to the left of the brachiocephalic trunk. ठीक है, it ascends anterior to the left subclavian artery and it's first anterior to the trachea and then to its left side. ठीक है, trachea और then it's on its left side. It enters the neck by passing posterior to the left sternoclavicular joint. ठीक है, left sternoclavicular joint. Now come on towards the इतना more than enough. Then left subclavian artery. ठीक है, अब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इट इज़ अ थर्ड ब्रांच ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा. इट राइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आर्च जस्ट पोस्टीरियर टू द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. इट इज लैटरल टू द ट्रेकिया एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी through the superior mediastinum. ठीक है, it has no branches in the mediastinum. Be remember this thing, the left subclavian does not give any branch inside the mediastinum. As it leaves the thorax and enters to the root of neck, it passes posterior to the left sternoclavicular joint और फिर वहाँ पर उसकी different है. This was whole about the great vessels of the superior mediastinum. मैंने आपको इस वक्त बताई हैं ग्रेट वेसल्स में जो वेन्स हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स. ठीक है, एंड ये देखें इस डायग्राम में दिखाई नहीं है. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, superior vena cava, how it is formed, what are the areas from there they get blood. ठीक है, एंड वेयर इट एंटर्स, इनकी एंट्री एग्जिट क्या है. देन वेन्स के बाद हमने स्टडी किया है अबाउट दी आर्टीरियल सप्लाई विच वाज थ्रू द असेंडिंग एओर्टा, जिसकी कोई ब्रांचेस हमें इधर नहीं मिलती, दैट आर ओनली द कोरोनरी ब्रांचेस. और फिर आर्च ऑफ एओर्टा जिसकी हमने सारी ब्रांचेस एक एक करके स्टडी की हैं. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर अबाउट द थाइमस, द ग्रेट वेसल्स of the this superior part of the superior mediastinum. ठीक है, अब एक चीज़ जो मैंने आपको superior mediastinum में बतानी है, that is important from the clinical point of view, is the widening of the mediastinum. कि widening of the mediastinum क्या होता है. ठीक है, the widening of the mediastinum is basically seen over the radiographs. ठीक है, जब chest radiographs जब आपको दिखाए जाते हैं तो whenever there will be a pathological cause, it causes a mediastinal widening. ठीक है, mediastinum बहुत widened उस chest x-ray में नज़र आता है. तो radiologists and emergency physicians sometimes observe this widening of mediastinum. And what is the causes, mainly आपसे जो पूछी जा सकती हैं, they are basically the causes of widening of mediastinum. ठीक है, तो any structure in the mediastinum contribute causing the pathological changes, it causes the widening of mediastinum. It is observed after any trauma that is resulting to head collision. For example, इनमें से कोई भी ग्रेट वेसल है दैट अंडरगो लेसरेशन आफ्टर द ट्रॉमा, तो देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द mediastinum, जो कि आपको फिर चेस्ट रेडियोग्राफ के ऊपर नज़र आएगा दैट देयर इज़ अ डायलेटेशन और वाइडनिंग ऑफ द mediastinum. ठीक है,
So, along with this, so you should remember the cause, that it may be trauma, a hemorrhage inside the mediastinum, or laceration of great vessels. Second thing is the malignant lymphomas, the cancers of the lymphatic tissues. They can also causes massive enlargement of mediastinal lymph nodes, okay, and ultimately the widening of mediastinum. Similarly, thymus के जो problems हो सकते हैं, they can also causes, ठीक है. और आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन द हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, ठीक है, दैट ऑफन ऑकरिंग ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज इन विच द venous blood returns to the heart at a rate that exceeds its cardiac output, okay, but it is mainly the common cause of widening of inferior mediastinum. तो inferior mediastinum में जब भी widening होगी तो वो heart से related होगी, और superior mediastinum में होगी तो वो मैंने आपको बताई है causes उसकी, कि वो laceration of great vessels हो सकती है, वो lymphatic lymphomas हो सकते हैं, या malignant lymphomas हो सकते हैं, वो thymus की कोई lymphomas होते हैं, esophageal कोई problems हो सकती हैं. These are pathological causes the widening of mediastinum. So you have to remember mediastinum, superior mediastinum's की boundaries, इसके contents, इसके relations, and along with this you have to remember the widening of mediastinum. फिर thymus में age related जितनी भी changes हैं, they can ask from you in the viva. So this was whole about the superior mediastinum.